ये सोक्रेटिस और प्लेटो की मुजस्समे बनाए गए हैं। सर नजर आ रहा है। जी सर। Socrates and Plato are two famous Greek philosophers whose ideas still impact society today. ये दो आर्टिकल ये भी नेशनल ज्योग्राफिक के ही हैं, इसमें हम सरसरी बस देख लेते हैं क्योंकि ये आपने पढ़ना ही है आगे। तो आई थिंक वी कैन सो इसमें असल में ये नाम इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं लोगों को देख रहे होंगे। इसमें मगर जो मेन मोटा मोटा पता होना चाहिए इंसान को, ये आई शेयर दीज लिंक्स विद यू, कि ग्रीक फिलोसफी में एक प्री सोक्रेटिक स्कूल है और फिर सोक्रेटिस के बाद और फिर सोक्रेटिस और फिर पोस्ट सोक्रेटिस। प्री सोक्रेटिक में पाइथागोरस आता है। मुसलमानों के ये अभी यहाँ पे बातें हो रही थी, मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाह रहा। असल में रीडिंग्स बहुत फर्क है। रेनेसांस या मॉडर्न टाइम्स की अलग रीडिंग है पाइथागोरस की, और पुराने टाइम्स में मुसलमानों की बड़ी फर्क रीडिंग है। मगर द मेन थ्री आर द सोक्रेटिक फिलोसफर्स इन एंशिएंट ग्रीक वर सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। मेरे ख्याल से इसको हम स्किप करते हैं, हम अपने वीडियोज ही की तरफ चलते हैं। इसमें क्या थी, इसमें मगर जो इसमें कुछ वो जो तीनों नाम मैंने लिए वो आज तक रेलेवेंट है वेस्टर्न फिलोसफी के लिए, इतना ही बस कहना चाहूंगा। इसी तरह हर फील्ड में आपको देखेगा जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी बुनियाद और उसके प्रिंसिपल्स और आज तक जो ओथ लिया जाता है वो ये ग्रीक ही वो ओथ कहलाता है, डॉक्टर्स भी लेते हैं। हिपोक्रेटिस, ये साइंसेस की बुनियाद भी है। We have the ancient Greeks to thank for things like present day democracy, libraries, modern alphabet, even zoology. ये वही है। इन नेक्स्ट वीक में जो आपको रीडिंग थी उसमें आप यही पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर इनसे पहले असल में उनके ही ये पाइथागोरस जो असल में एक रूहानी सिलसिला था पाइथागोरस का, और ये उसी के असरात चल रहे हैं डाउन टू एरिस्टोटल। मगर वेस्ट इस तरह रीड नहीं करता है इसको, तो खैर इसको हम स्किप करते हैं, अपनी ना फिल्म्स की तरफ आते हैं। इसका नाम है एंशिएंट ग्रीस। दिस इज द फर्स्ट वन आई लाइक टू शो यू। Art, philosophy, democracy, and heroes. These are just a few achievements of the legendary civilization known as ancient Greece. Ancient Greece was born on the shores of the Aegean Sea about 4,000 years ago. In over a millennium, it expanded to lands as far west as Spain and as far east as India. Throughout this age of empire, the ancient Greeks made political, militaristic, and cultural achievements that resonated long after their empire fell. Part of the ancient Greeks' legacy involved politics, one of which was the political system of Greece itself. Unlike many nations that were under unified rule, Greece was a collection of over 1,500 territories that acted as sovereign nations. Called city-states, these territories had their own rulers and sometimes fought each other. Another political development was the institution of the first large-scale democracy. Developed in the city-state of Athens, democratic rule was a way to give the Greek people representation and political power. The Greeks also earned a strong reputation for their military. The military helped expand the Greek Empire by establishing colonies overseas, and it protected Greece itself from foreign invaders like the Persian Empire. When such a threat occurred,
city-states united to defend their homeland. Many Greeks, particularly in Sparta, took immense pride in their military and regarded their soldiers as heroes. Their heroism was often turned into legend thanks to literary works like the Iliad. War heroes also inspired the creation of the Olympics, which celebrated physical competition. Of all aspects of ancient Greek civilization, their cultural contributions left a considerable mark on the Western world. Particularly noteworthy were the ancient Greeks' art and architecture. They created incredible sculptural works, such as standing figures and reliefs. Plus, they developed 3 types of columns and incorporated them to structures like the Parthenon. This artistry was imitated by other civilizations and spread throughout the globe for thousands of years. How the Greeks interpreted the world was also reflected in other cultures. Greek religion, which was comprised of many anthropomorphic deities, helped shape the spiritual beliefs of the Etruscans and later the ancient Romans. Greek philosophy, which explored matters of reason, ethics, and natural law, influenced later civilizations' achievements in politics and science. Greek language made quite an impact as well. Ancient Greek, at about 3,400 years old, provided the basis of many modern languages. The English language alone has thousands of words with Greek roots. Ancient Greece's artistry, regard for heroes, and democratic rule left a considerable impression on world history. With contributions that lasted for millennia, the civilization of ancient Greece is nothing short of legendary. ये एक तरह का ना इंट्रोडक्शन था, क्योंकि थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल भी तो होना चाहिए ना, जियोग्राफिकल भी। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे आ जाते हैं। फ्री स्पीच, और मैं किसमें कर रहा हूँ। Freedom of speech actively encourages the Greek exploration of humanity by allowing you to express your ideas freely. And there are big, chunky issues being debated in these dramas. What is it to be human? How far do we have freedom of expression? How far can we push authority? Pericles himself had caricatures of him in the comic theatre. He always wore his helmet in public, we don't really know why, so he often had an onion on his head in the comic theatre. With his 7 most famous words, the unexamined life is not worth living. In a way, he gives us the modern world. He tells us that inquiry and exploration and expanding your mind should be something that isn't seditious, but that is central to the human experience. Socrates is guilty of wrongdoing because he corrupts the young and because
It doesn't believe in the gods of the city, but rather in new demons. His sentence should be death. ये एक अब देखिए ये वेस्ट की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सारी वैल्यूज को किस तरह ग्रीस से जोड़ रहे हैं। अगला है अब ये पॉलिटिकल, ये रिपब्लिक जो थी ना प्लेटो की, उधर से आ रहा है, वो भी इट हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन वेस्टर्न कल्चर, तो उसको भी मगर ये आज से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ISIS, global climate change, economic inequality, institutional racism. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Don't be an animal, because right now that's what you guys are. You're animals. Idea is that you can't do anything unless you are wise. Is you have to think critically. You cannot allow bankers or governments or politicians or your parents or your teachers to tell you what is true, what is right, how you should live your life. We're living in tumultuous times, and philosophers in ancient Greece would have had an approach to that. So they would have said, okay, this isn't just a one-off problem, we've got to work out why this is happening and how we solve it in a much smarter and more long-term way. The Greeks were very certain that philosophers were valuable because they had big answers to big problems. We all need a bit more Greek philosophy in our day-to-day lives. He promotes the concept of the philosopher king as the better system, not oligarchy, not tyranny, not dictatorship, not democracy, but the philosopher king, the person that doesn't want to rule, but rules in order not to have his fellow citizens fall in the trappings of desire for power. Interesting. दो रहेंगे देख लेते हैं religion according to the
We were fortunate, very fortunate, and I think I have to thank God for that. I want to thank God. We'd like to thank God. Thank God. Thank God. Touched by the grace of God. There was no part of your life that was not a religious experience. So theatre, politics, justice, marriage, entertainment, battle, all of this had a religious element as a part of it. When they were being rational and logical and enacting democracy, for instance, superstition and ritual was a huge part of that. They would go to the Athenian assembly and they would sacrifice a piglet before they did that in order to kind of make sure that justice was enacted in the right way. Their gods resemble them. They created the Olympian gods as human beings, with their thoughts, with their ways of thinking. The only way that you can live on is if you do great deeds. So if your name is sung after you've died, and I think this is one of the reasons that the Greeks achieve so much, is that they have this notion that the best way to become immortal was to do something in your life that made you worthy of immortality. अब लास्ट देख लेते हैं, डेमोक्रेसी पे है। कुछ मुझे लगता है पिछले वाले होना चाहिए था कोर्स में, शायद कुछ कोई उन्होंने एंजॉय करना था, ये पॉइंट मिस कर रहा था। वो हमें भी उसकी वजह समझ आई कि मिसिंग हो गया। वी थॉट कि ये तो सबको पता है। Where some of your friends destroyed this economy. You know, excuse me, I'm talking. Few signs of a solution at the Capitol Tuesday morning as the blame game continued. The American people expect the Senate to do their job. Government shutdown. Shutdown. Shutdown could mean for the economy. We are not a democracy. It's not power to the people. It's power to a chosen set of politicians who the people, yes, have chosen, but then have to put up with once they are in the corrupting position of being in power.
The very fact that the United States wants to present itself as a democracy, the idea that everyone has a voice and should be heard, this is something that we're directly in debt to Greece. You could sit on the council and vote for a law 1 year. The next year you might be sitting as a juror deciding on the constitutionality of that law. The third year you might be the magistrate who was supposed to enforce it, because the citizens could hold any position pretty much in rotation as they pulled names out of a hat. Democratic means one human, one vote. If you had a time machine and if an Athenian dropped into the US, an Athenian would say, well, you're not a democracy. You yourself didn't vote on the latest tax increase or Obamacare or anything like that. That was decided for you. Thanks to the proliferation of computers and that universal mind that is the internet, we could be a democracy like Athens, where everything was voted on, and we simply need to set up government internet sites where you go in, you identify yourself, and you cast your vote. We can get rid of the House of Representatives, we can get rid of the Senate, we can get rid of the Supreme Court, we can get rid of the whole judicial system. Mob rule, we like to call it. Well, mob rule is democracy. We can't have it both ways. We can't demonize the mob and sing the praises of the demos, the working class. We're all the same people. We are the mob. And if you give each of us one vote, and your vote counts as much as anybody else, now you're getting democracy. तो जनाब मेरी तरफ से तो ये आज प्रेजेंटेशन खत्म हो गई और आप लोगों का क्या कहना चाहिए रिस्पॉन्स या रिएक्शन यहाँ से शुरू करते हैं लीना। मुझे ये वीडियोस बड़े मजे की थी, वेरी वेल मेड। एंड जो एक चीज मेरे जहन में जो डिस्क्रिप्शन आ रही थी वो देखते हुए जो कैरेक्टर स्केच बनता जाता है, दिस एलिमेंट फिट्स ओवर हियर, दिस एलिमेंट फिट्स ओवर हियर, तो मुझे मार्कस और ऑर्लियस का ख्याल आ रहा था, अल्टीमेट प्रॉब्ली थॉटफुल डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो डिफाइन करता है कैरेक्टर। बिल्कुल, ये इसका असर बड़ा मतलब इस्लामिक फिलॉसफी में भी रहा है। सारे फिलोसफर्स ने ये रिपब्लिक की तरह की बुक्स लिखी, व्हाट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ये इनलाइटेंड फिलोसोफर किंग, और यानी कि किंगशिप का जो तस्वुर है ना वो मुगल टाइम्स तक चलता है। किंग एक बेनेवलेंट जस्ट ओवरसीयर है, वो टायरेंट या वो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कस्टोडियन ऑफ गॉड्स ग्रेस। तो काफी यानी कि न्यूआंस्ड चीजें रही हैं। खैर वो भी हमारा मौजूद नहीं है जी। सही। हाँ, आज का जो मेन टॉपिक था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तार के रूट में तो वो बड़े मजे की ये वीडियोस थे और रीडिंग्स के हवाले से। मतलब अब ये मेरे ख्याल से एक अनक्वेश्चन चीज है कि वो मानते हैं कि हम ग्रीक से हमने सब कुछ लिया हुआ है। मतलब ये एक इस दो राय वाली बात नहीं है। तो आज इसके बारे में हमें अच्छी मालूमात मिली। टीम आपको चैट करना चाहेंगे, जब अभी ब्रेक थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आप कर रहे थे। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमारा मॉडर्न सारा जो भी स्ट्रक्चर है वो ग्रीक से लिया गया है, then why the name modern? Why the name modernity? जी जी।
So वैसे ये सोच रहा था कि आज की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत सारी सोचें जो हैं वो होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जरूर लेके आऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। लव्स मॉडर्न का मैं जो है ना, जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसमें एक ये रेनेसांस में कॉइन किया गया था, क्योंकि वो इन अ सेंस ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी पे रिएक्शन था ना, वरना तो कैथोलिक चर्च और ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी थी मिडीवल जिसको कहते हैं। तो जब रेनेसांस में वो उससे एक बगावत सी हुई तो फिर ये कहने लगे, और फिर उसको ग्रीक ट्रेडिशन पे बेस किया, क्योंकि बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी से एक तरह की चर्च से बगावत थी। तो फिर कहाँ गए, चर्च से पहले चले गए, दे स्किप्ड दोस 1000 years, वेंट बैक टू द तो वो फिर कहते थे उस जमाने में विया मॉडर्ना, द न्यू वे। जो लोग इस तरह सोचना शुरू हुए थे ह्यूमनिस्टिक तरीके से, वो एक नई राह निकाली इस तरह से, वो कि वी आर द न्यू वे, मतलब नया फैशन आता है। तो आई थिंक इसी तरह डॉक्यूमेंट में भी लिखा होता है कि इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो मॉडर्निटी है इज नॉट द सेम एज कंटेम्परेरी। जी दैट्स ये सारा कुछ किया ही इसलिए कि नॉर्मल फर्स्ट रिएक्शन यही होता है बंदे का, मॉडर्न देख के समझता है कि आज, तो वो तो डिक्शनरी मीनिंग है। आज इस सेशन से हमने ये दिखाने की कोशिश की, नहीं ये एक सोच का नाम है और ये रिकग्नाइज्ड है। वेस्ट में तो बहुत है मगर हमारे यहाँ कम मैंने देखा है। हम ये मॉडर्निटी समझते हैं। हाँ मतलब हम ज्यादा असल में तो सोचना ही नहीं, भूलते हैं शायद। और आपने 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 आपसे कुछ ये नौशीन आप कुछ पर ये जो वीडियोस दिखाई इनके हवाले से, आई थिंक द मैसेज इज प्रॉब्ली क्लियर। Absolutely. I think मुझे इसके अंदर जो एक एलिमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा कह लें, प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ सेलिब्रेशन कह लें, I find maybe ये थोड़ा सा ऑफ हो जाए, but what I find with the white Eurocentric civilizations is कि उनका जब दिल चाहता है तो एक चीज राइट हो जाती है, जब दिल चाहता है तो वही चीज रॉन्ग हो जाती है, फिर दिल चाहता है वो राइट हो जाती है. So it's when they were talking about the freedom and questioning the freedom, so when it comes, example दे रही हूँ, for example child labor is bad, but over there if a child goes and mows a lawn for money, not child labor, but this is a very specific American capitalistic point of view, जो कि उसमें बड़ा evident था in the videos. I'm critically not analyzing the subject, but the approach, and that approach rises in that approach itself contradicts the whole democratic foundation. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, That's it. एक एक्सेलेंट, और मतलब कि इसको दिखाने की जो एक इंटेंशन थी, एक तो खैर फैक्ट्स थे जो मतलब है एस्पेक्ट्स बता ही रहे थे, मगर उससे ज्यादा मुझे लगता है कि एज आई सेड बिफोर आल्सो, दिस इज आल्सो अ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी शुड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, हर चीज को उससे जोड़ के दिखाने की कोशिश है, या उसकी रोशनी में लेट्स गो बैक टू द आवर रूट्स. वो मसला भी है, डेमोक्रेसी में इतने मसले हैं, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल एंड सो ऑन सो फोर्थ. दैट वाज आल्सो वेरी, जैसे आपने कहा ना कि इसके अंदर एक कुछ और भी है, जो भी अभी आपने बात कही थी ना, एक तरह का प्रोपेगेंडा कह लें या सेल्फ इमेज है, दैट कम्स थ्रू वेरी क्लियरली, क्योंकि ये इम्प्रेशनेबल यंग लोगों के लिए बनाई गई है, तो वो भी इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट. I think जो point आप कह रहे हैं, that is maybe one of the strengths of the system, is that they are they do self-criticism, and they do accept that if there is something wrong,
then they do reevaluate and reassess. So that certainly is मगर इसी आपकी बात से एक और पॉइंट सामने आता है कि जो अग्रीड अपॉन ह्यूमनिस्ट फाउंडेशंस है ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वो बहस भी होती है तो उसी के दायरे में हो रही है। ये भी इसमें से एक चीज मतलब है सामने आती है आपकी बात से। सही जी, फारूक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक तो आज की वीडियो से और सारी इससे बड़ा एम्पली क्लियर हो गया कि उनका सेल्फ इमेज जो है वो कहाँ से डिराइव कर रहे हैं। और ये जो नौशीन ने कहा कि उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं, चीज़ें वो जौन सी सूट करती है वो अप्लाई कर देते हैं, और जिस पर जौन सी चीज़ सूट करनी है वो अप्लाई करते हैं जिस जगह पे उनको फ़ायदा देती है। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। बीच में आपने ये क्लियर हो गया। बीच में आपने एक और पॉइंट किया कि जो उनका जो मिडिल एजेस वाला टाइम था, जो कि एक्चुअली रोमन कैथोलिक चर्च का टाइम था, उसको उन्होंने स्किप कर दिया। जब ये एज ऑफ रीजन आई और सारे को स्किप करके उन्होंने अपनी रूट्स कहीं और ले गए, वो पुराने ग्रीक में ले गए या उसको नए तरीके से उन्होंने कर लिया। उसकी वैसे तो ये किसी और दिन का टॉपिक है, लेकिन इस सवाल को आप ज़हन में रखें। मेरे नज़दीक मुझे बहुत ये सवाल वो करता है कि जो चीज़ जिस टाइम से यूरोपियंस अपनी क्रिश्चियनिटी के साथ स्ट्रगल, और क्रिश्चियनिटी चर्च उनके साथ जो कर रहा था, चर्च हैड अ लॉट ऑफ पावर। शायद आज का पाकिस्तान या आज के पाकिस्तान में आज का अफगानिस्तान और एक दो और मुल्क, हम उसी टाइम से लगता है कि गुजर रहे हैं। और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, क्योंकि जो लोग उससे गुजरते हैं उसको फर्स्ट मतलब उस पर फेस करते हैं, वो उससे एक हद तक मुतनफिर होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये किस्म का सोल्यूशन नहीं है। तो फिर या तो वो लिबरल हो जाते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं, या पीछे वाली को टाइम पकड़ते हैं जो कि अगेन आजकल एप्लीकेबल नहीं है। तो और मैंने अपनी जिंदगी में रिलीजन को एज अ कम्युनल कंट्रोल के तौर पे, मैनिपुलेशन के तौर पे देखा है, और कंक्लूजन के रिलीजन जो है वो अगर है तो वो इंडिविजुअल के अंदर है, जो कि आज का मॉडर्न व्यू है कि रिलीजन का ताल्लुक इंडिविजुअल के साथ है। मैं ऑलमोस्ट इस पर चल रहा हूँ। ये किसी और दिन के लिए सवाल है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत बड़ा सवाल है। इसको आप ज़हन में रखें, जब भी मौका आएगा इसको आप डिस्कस करेंगे या क्लैरिफाई कीजिएगा। बस एक ही जुमला कहूंगा कि ये बात आपकी 100% सही है कि हमारी सोसाइटी में भी ये दोनों पावर्स बड़ी क्लियरली एक्ट कर रही हैं। हुआ ये है कि ना, जो मॉडर्निटी है वो हमें जो है ना स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, एजुकेशनल चेंजेस आए हैं, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन मॉडर्निटी, मगर हमें उसकी रूट्स नहीं पता। सिमिलरली जो हमारा ट्रेडिशनल साइड है, रिलीजियस साइड है, उसका हमें सिर्फ ब्लाइंड फेथ वाली साइड रह गई है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल साइड थी वो तो हमें उसको तो रिप्लेस कर दिया। जो ट्रेडिशनल मदरसा था या यूनिवर्सिटी थी, उसकी जगह अब तो सेक्युलर कॉलेज यूनिवर्सिटी आ गई है, स्कूल आ गया है, तो उसकी तो नशोनुमा होती नहीं है। तो वो रह जाता है एज फेथ, एज समथिंग, मेरी वैल्यूज है, मेरा फेथ है, यानी कि सब्जेक्टिव अकल उसमें नहीं इतनी इन्वॉल्व रहती। तो ये हमारी अपनी जातों में ये प्रॉब्लम है, हम उसकी भी रूट, अपनी भी रूट नहीं समझते। ये जो हम ये कर रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है, लॉजिक है, जो कि कोई भी सोचने समझने वाला इंसान तो ये सवाल पूछता है। तो इन अ सेंस इट इज अ पैरेलल टू ऑल ऑफ दोज मोशंस थ्रू व्हिच द वेस्ट वेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हमें बहुत ही मुख्तसर टाइम में उसी में से गुजरना पड़ा। ये बहुत ही रेलेवेंट है। आप असल में इस कोर्स का सवाल शायद यही है जो आपने अभी एक उसके जहद से पूछा है, तो हम इसी को तो एक्सप्लोर करेंगे। मुझे लगता है इसकी काफी जहतों पे रोशनी डलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी निदा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी या कमेंट या रिएक्शन या रिस्पांस? जी, मैं नौशीन के साथ सबसे पहले एग्री करना चाह रही थी कि मैंने काफ़ी टाइम यूएस में गुजारा हुआ भी है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है किस तरह से मतलब अपने आप को वो बेस्ट कंसिडर करते हैं, तो जो भी सही होगा और वहीं से सारी आइडियाज और सारे वही आते हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही नज़र आ रहा था। और दूसरी बात ये थी कि वो ग्रीक सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे थे, जैसे कि मतलब उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आजकल के ज़माने में बिल्कुल ये लोग सह नहीं सकेंगे, लेकिन उसको उन्होंने कहना
ग्लोरीफाई किया है और इस तरह दिखाया है कि wouldn't it be nice if we go back to that time? बिल्कुल नाइस नहीं होगा, मतलब वहाँ उस टाइम में जितनी जातियाँ होती थी और जितने मसले होते थे, लाइक बिल्कुल भी इनके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो बस ये दो चीज़ें मैंने नोटिस की, लेकिन ओवरऑल अच्छा प्रेजेंटेशन था और विजुअली अपीलिंग भी था और बेसिक्स उन्होंने अच्छी तरह से बताया। जी ज़रूर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन थी जो वीडियोस आपने दिखाई। मुझे पूरे सेशन के अंदर जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी वो यही अप्रोच थी कि जो हम खुद वेस्ट को देखते हुए उनकी जो सेल्फ इमेज वाली बात आपने की, हाउ द वेस्ट प्रेजेंट्स इटसेल्फ, वो चीज़ बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली उससे क्लैरिफाई हो जाती हैं। स्पेशली लाइक द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ग्रीक कल्चर एंड हिस्ट्री। अब बहुत सारी चीजें जिसका सेहरा वो ग्रीक और रोमन कल्चर को देते हैं, हमें बहुत सारी और मतलब इवन इंडियन एंड चाइनीज ट्रेडिशंस के अंदर हमें वो चीजें मिलती हैं, लेकिन अगेन वो उसके अंदर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री और जो कॉलोनियल उनका इम्पैक्ट रहा है उसकी वजह से हम उसे एज इट इज कबूल भी करते हैं। तो बल्कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज भी थी कि इवन जो हम जिसे इस्लामिक फलसफा कहते हैं उसकी भी रूट्स इवेंचुअली तो ग्रीक फिलोसफी से जाके मिलती हैं। हम अरस्तू को मौल्ले में अव्वल भी कहते हैं, लेकिन हमारी परसेप्शन ऑफ ग्रीक फिलोसफी या जो लेसन हमने वहां से हासिल किए हैं वो बहुत 180 डिग्री का फर्क है उनसे जो वेस्टर्न फिलोसफी वहां से हासिल करती है। तो वो जो सेल्फ इमेज का एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो इट्स नॉट अ वेरी न्यूट्रल सब्जेक्ट, इट्स लाइक लोडेड विद देयर perceptions and projections. एग्जैक्टली हम असल में ब्रेक में यही बात कर रहे थे जो आपने भी कही कि ये एक रीडिंग है और ये उन जैसे आपने कहा ये मुसलमानों ने भी उन्हीं लोगों से इस्तेफादा किया मगर वो बिल्कुल उसको और तरह से उसको समझे। वो हम नेक्स्ट सेशन में मेरे ख्याल है वो पॉइंट भी देखेंगे। कौन रह गया? वो जुबैर साहब आप कब आए? अगर आप कोई कमेंट करना चाहे तो। फिर मैं दूसरे सेशन में आया हूँ, मेरा पहला सेशन मिस हो गया। तो खैर हम इस आज के सेशन का वैसे वन लाइन ही ऑब्जेक्टिव था, जस्ट टू शो दैट द मॉडर्न वर्ल्ड सीज इटसेल्फ एज बीइंग रूटेड इन द ग्रीक ट्रेडिशन। तो रीडिंग्स भी ऐसी ही थी और ये वीडियोस भी उसमें से एक एक पॉइंट को दिखा रहे थे। तो यूएस तो शाइनिंग एग्जांपल है ही, देख लेते हैं उसी को। मैं ख्याल उसी को स्टडी कर लें, सारे आपके सवालात का जवाब मिल जाएगा। नहीं लेकिन मैं एग्री करता हूँ, वो जो वीडियोस भी देखी मैंने, सारी चीजें जाहिर है एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हमारे पे मुसल्लत किया जाता है और बहुत कम लोग हैं। चूंकि मैं यूएस में रहता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनको इसका एहसास है। मेरे ख्याल में एकेडेमिया में ज्यादा इसकी अवेयरनेस है, बाकी जो कैपिटल पे जो उनकी अवेयरनेस है वो बड़ी उन्होंने उसको दबाया है। और ये एक बस एक ये है, ये माइंडसेट है, सो इट्स नॉट गोना चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। ये समिया आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? फिर उसके बाद एंड में सायरा बचेंगी। जी जी सर, जो रीडिंग थी और वो पढ़ी हमने और आज ये जो वीडियोस देखी तो वही बात है। और ये है कि जैसे कि टाइटल था वीडियो का द ग्रेट गाइड टू ग्रीक गाइड टू ग्रेटनेस, यानी उन्होंने ग्रेटनेस पहले ही जो है बता दी और यानी खुद ही उसके ऊपर ही सारी घूम रही थी ना जो जितने भी क्लिप्स थे। तो और वो उन्होंने अपनी रूट्स जो है ग्रेटनेस की तरफ जोड़ के बताया कि वेस्ट इज द ग्रेट। तो यही सारा था, बाकी बिल्कुल क्लियर हो गया है, बड़ा अच्छा रहा। रीडिंग भी बहुत अच्छी थी और ये क्लिप से तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि ये जो वेस्ट है वो मॉडर्निटी को मसलन अपना जो रूट्स है वो ग्रीक को की तरफ ले जाता है। और आपने जैसे मेंशन किया कि वो बीच में एरिया उन्होंने जिसको हम लोग डार्क पीरियड जो पहले अपने पढ़ा है कि जब वो ज्यादा टुवर्ड्स अपने चर्च के और वो सारा जो सिस्टम था उनका अलाउ नहीं करते थे साइंस को, एजुकेशन को, जितना जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है।
तो उसको वो बिल्कुल भूल कर उसको बिल्कुल एक साइड पे रख के ग्रीक के साथ जुड़ जाते हैं। एक जो वीडियो क्लिप में उनकी जो लास्ट वाली थी डेमोक्रेसी की जो उन्होंने सोल्यूशन वगैरह, वो भी बड़ा अच्छा था मुझे लगा, जो काउंसिल ज्यूरी और लेजिस्लेटर वाला था कि उसको अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अच्छा रहा है जी, सेशन क्लियर है बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। वो इसलिए जो मिडिलीवल एजेस को आप जैसे स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं उसको डार्क एजेस भी कहते हैं ना। तो एक मिडिवलिस्ट ने लिखा as our ignorance of the middle ages grows the darker they grow। क्योंकि उसमें एजुकेशन भी थी, साइंस भी थी, आर्ट भी थी, रूहानियत भी थी, मगर वो पिक्चर ऐसी बनानी जरूरी थी। और उसके आखिर में जाहिर है काफी वहां पे वो जो प्लेग आया और चर्च भी बहुत करप्ट हो चुका था, वो बुरी बातें भी थी, मगर ऑन द होल इट वाज एन एज ऑफ बिलीफ कह लें। तो वो उसकी भी एक पिक्चर बनाई गई ना कि उसको डार्क कह के बताया गया कि उसमें हर चीज ही बुरी थी, क्योंकि उसी पे तो रिएक्ट हो रहा था। जी सायरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? टाइम हमारा वैसे पूरा हो गया, तो इसके बाद हम फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। सर सबने काफ़ी पॉइंट्स ऐड करते हैं, मैं भी वही सब मेरे माइंड में भी आ रहा था, लेकिन जो मुझे मेन अभी समझ आई है कि जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें ज़्यादातर वो पोस्ट ग्रीक हिस्ट्री है, और जो आपने आज इंट्रोड्यूस कराई है वो मेरे लिए नहीं है कि वो प्री हिस्टोरिकल जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, तो उसको ज़्यादा पढ़ूंगी तो मुझे समझ आएगी, क्योंकि अभी बिल्कुल मैं कंफ्यूज हो गई हूँ दोनों में। हाँ जी, मतलब ये तो एक तरफ से बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये अब हर बंदे को खुद ही जिसको शौक हो, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट। मैं भी काफी वैसे पढ़ता रहा हूँ, मगर वो आप खुद करने वाली बात है। हम तो जो इसमें से लेना चाह रहे थे, जो बात अखज़ कर रहे थे, हमने उस पर ही फोकस किया। मगर यू राइट, इसमें डिटेल्स तो बहुत है, अलग अलग तरह की स्टैंड्स हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस भी हैं, तो बहुत वो यूजफुल भी है, आज तक यूजफुल है। हमारी कोर्स असिस्टेंट हैं अफीरा, आप कुछ कहना चाहें तो फिर लास्ट वर्ड। मैं इसमें काफी लोगों ने कह चुके हैं। तो मेन जो था कि आज के दौर को देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए बाकी दौर भी देखने पड़ते हैं। तो फिर जो ये है कि वेस्ट का जो है कि वही वाली बात, कायदे वाली बात के खुद भी वलायत से ही पढ़ कर आए, तो फिर उन्हीं की जुबान में उन्होंने बात की। और सही बात, जो है ये भी अच्छा पॉइंट है। ये है कि अगर है तो फिर वो कहाँ खड़े हैं और किधर खड़े हैं वो देखना भी जरूरी है, बहुत जरूरी। और फिर दोबारा भी हम उसी में बात कर रहे हैं, उसी में है, तो फिर आजकल की जनरेशन है उसके लिए ज्यादातर अंग्रेजी जुबान है, फिर अंग्रेजी जुबान के साथ कल्चर इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए अंग्रेजी जुबान लेके और ये सारी डॉक्यूमेंट्री देके दिखाना, और ये पीछे जाके कि ये जो अगर इस जुबान को आप देखें इसके पीछे क्या स्टैंडिंग है वो भी देख ले, और कुछ अपनी भी जुबान से और अपने रवायत से वो भी जरा पीछे जाके हम दिखा दें कि जो आजकल का जो है वो जो डिपिक्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान वगैरह में वो नहीं है। तो बिल्कुल यही मकसद है, यही मकसद है। बिल्कुल आपने बहुत पूजे में मिट्टी जो पड़ गई है उसको खुरच के उतार के जरा देखे, बहुत जबरदस्त। मिट्टी अभी उतार रहे हैं ऊपर से, क्योंकि जो अंदर जो दफन हुआ वहां से निकाल के हमारे मिट्टी निकाल के आजकल के दौर में जा रहे। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा दफा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने। थैंक यू, क्योंकि अफीरा ने पिछला वाला भी काफी सारा अटेंड किया और कंफ्यूज ये भी हुई, बाकी स्टूडेंट्स भी हुए, तो उसके जवाब में अच्छा है कि यही रिएक्शन दे रही हैं इस किस्म का। तो अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। वो नेक्स्ट रीडिंग्स आप पढ़ लीजिएगा संडे वाली तक, तो ज्यादा यूजफुल होगा। जी अब्बास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज काफ़ी सारी चीज़ें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, बस एक दो छोटे छोटे कमेंट्स मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैराडाइम शिफ्ट आया था ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन यूरोप से आप
रेनेसांस पे आए और जो मॉडर्न एरा शुरू हुआ, तो एक फूड फॉर थॉट अगेन। और ये मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप थ्रू आउट दिस कोर्स सोच सकते हैं। आई थिंक ये रूट है मेरी नज़र में, वो ये कि जैसे भी तैमूर साहब ने खुद कहा था कि रीजन वाज कट ऑफ फ्रॉम रेवलेशन या इंटेलेक्ट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन रीजन इज कट ऑफ फ्रॉम रेवलेशन या इंटेलेक्ट, तो फिर रीजन, फैकल्टी ऑफ रीजन को क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं, ये सोचना चाहिए कि फिर वो उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं व्हेन रीजन इज नॉट इल्यूमिनेटेड या गाइडेड बाय रेवलेशन या इंटेलेक्ट। इसके अंदर भी काफ़ी सवालों के जवाब छुपे हैं बेसिकली। ये जितने भी ये कल्चरल चेंजेस आई हैं, इंटेलेक्चुअल फ्रंट में जो चेंजेस आई हैं, बेसिकली उसके पीछे रूट यही है कि व्हेन रीजन इज कट ऑफ फ्रॉम रेवलेशन या इंटेलेक्ट, तो फिर रीजन को क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं। उसमें सिर्फ एक बात, अगेन फूड फॉर थॉट, एक बात उसमें मैं एक पॉइंट सर मेंशन, उसकी डिटेल नहीं, उसके ऊपर आप सोचें बाकी पास जाके, पार्टिस में जाके, कि रीजन ऑन इट्स ओन थ्रू रीजन यू कैन नॉट रिकंसाइल ऑपोजिट्स। वो जो इज्तिमाई ज़िद्दैन जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना, रीजन ऑन इट्स ओन कैन नॉट रिकंसाइल ऑपोजिट्स, या रीजन ऑन इट्स ओन कैन नॉट ट्रांसेंड डुअलिटीज। बस ये फूड फॉर थॉट है मेरी नजर में, इसके ऊपर सोचें। ये थ्रू आउट द कोर्स आप इस एक मुद्दे पे गौर कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू बात साहब, बहुत जबरदस्त।